Hello everyone and welcome to our workshop on Primera P6 and MS Project. We are truly excited to have you with us and look forward to making this a valuable and engaging learning experience. So I am Preetham Barada, your host for today's session at Protrainy. So we are proud to be an IIM Ahmedabad Ventures funded skilling platform with a mission to make a civil engineering students industry ready through hands-on projects based training. So far we have the privilege of training over 17,000 plus civil engineers from 700 plus companies and 4,000 plus colleges across the globe. So, if you want to connect with us regarding the future course upcomings or any future programs or any workshop or any trials, so you can connect it with us on Instagram, Facebook, and LinkedIn. By searching Protrainy, you will be can follow us and you can get the updates of future programs and workshops. So just before starting the session, I just want to know everyone's intro means your name on from which company you are working and how many years of experience you have. So one by one, they can turn on the cameras and they can speak out. Anyone can start. Imran Azam Khan, can you please inform where you're from and what is your work experience, which company you are currently working? Yes, Farod, sure. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Imran Azam Khan, and I have done my master's in construction management and in 2018 and BTech in civil in 2013. Right now, I have a more than 11 years of experience, specifically in industrial construction project management. And right now, I'm currently working with the CSCC, China State Construction Engineering Corporation. And now I'm looking for also the other opportunities too. That's why I thought that I should have to upskill one of my skill of project management, which is related to the software which you are going to teach us is P6. So I would just want to be very professional in that particular subject. And yeah, this is the things which I'm right now working or what I have experience. Yeah, thank you, sir. Thanks for giving the information. So next, we can have Arka M. Yeah, hi. Yeah, I am Yeah, Arka hi. M. Yeah. So actually, I'm using a desktop. That's why I don't have a webcam. Okay. Okay. So yeah, I have a total 9 years of experience, and I am working with Jacobs. Okay. So in project controls department as a cost controller. So I want to switch to planning and scheduling. That's why I have joined this webinar. Thank you. That's Thank you, sir. great. Thank you for providing the information. So next, we can have Deepu Saikia. Good afternoon, all of you. Good evening, all of you. My name Hey, is good afternoon. Deepu Sarkar. I am enrolled in a construction management course in Protrainy. I am currently working in a Taro Take Construction Company in IM Shillong permanent campus building. I am passed out in 2014. Thank you. Thank you, sir, for giving the information. And how many years of work experience you can please inform to जैसे everyone? 3 महीना कोविड होगा ना आपको आया अभी तो I आया have the वापस experience of 8 years. 4 महीने के लिए ऐसा कुछ नहीं नहीं क्या होता है Thanks. आप अंदर 8 years दोनों working experience पकड़ेगा I आप have ऐसा ही रहेगा वो 2 महीना रहो अगर कुछ भी नहीं करेगा भाई in उसको building. डरना नहीं हमारे पास इतना पावर है कि हम किसी को निकालना तो निकाल भी सकते It's a little bit disturbing. Okay. So next, we can have Achintya Mundal. Hello, good afternoon, good evening. Good evening. Hello. Yes, please. Actually, I Yes, just hello. joined right now. I don't know what I'm discussing right now. Yeah, just we want to know your name and where you are working and what is your work experience. That's all. Okay. Good evening, everyone. My name is Sachin Mandal. I am currently working as a planning and billing manager in Sapurji Balaji Limited Yeah. for taking care of 4 diesel projects in Gujarat region. Previously, I have worked in Larsen and Toubro Limited. My total work experience is 12 years. Thanks for the information, sir. So next we can have Govind Raj MB. Govind Raj, Hi, good yeah, you evening. can turn on your camera and you can speak up. Yes.
Hi, good evening. Uh, Good evening. I'm working in a CBRE company as a planning engineer. I have a totally 8 years of experience. Thanks for the information, sir. So next we can have Joginder. So Joginder, Hello. Hello. yes, hello, sir. Hello. Yes, sir. Your voice is audible. Yeah, good evening, sir. Good evening, sir. Hello. Good evening. Good evening. Yeah, myself Joginder. I have done my BTech in 2013 and working as a billing engineer, architect, builder. 12-year plus year experience. And currently I am working in Punjab, Ludhiana. Okay. Thanks for the information, sir. Okay. Next we can have Navneet Tiwari. Navneet Tiwari, you can please unmute and you can start speaking. Navneet Tiwari, are you there? Okay. Prasad P. Good evening. My name is Prasad. I am working US billing, 3 years of experience. Next, I am interested to QS planning. That's why I am joining this in course. But already we are working with MS project. In continuation, I also interested to Primera. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. Next we can have Rohan Singh. Rohan Singh, are you there? Okay. So I think everyone is busy. So, just welcome to our means our expert, Mr. Agarwal, who have a work experience of over 12 years and have proven track records of working on numerous projects and training over 1,000 professionals. And he is a renowned expert in this field. As the author of the acclaimed books, he has demonstrated a passion for knowledge sharing and education. Throughout this workshop, Mr. Agarwal will share his wealth of experience and insights on how to effectively utilize Primera P6 and Microsoft Project to enhance your project management skills. Let's give a warm welcome to Mr. Sanjay and get ready to learn from the best. Over to you, sir. Thank you, Pritam. Thank you so much. Good evening to all. So we all are here Good to evening. understand what is okay. So we all are here to understand what is project planning and project management. So before starting the session, I would like to know how many of you already in the planning field? Is anyone who is already in the planning field? Yes, I am. Okay, great. So are you working on using any kind of software for that, Yes, I was for using planning? MSP. Yeah, I was using MSP, Microsoft Planning. Yes, Great. Okay. So you are looking to for Primavera, right? right, right. Okay. Great. Okay. I What am about also other? working as a planning. Okay, you are working as a planning engineer. Great. So are you using any kind of software? I have managing four Primavera P6 schedule of four projects of mine. Okay. So you are looking for MSP. No, just I want to know two other things that I don't know. Okay. In P6, I think project planning, project management, and EVM tracking, everything is there in project management, and we teach in a deep in terms of project management in MSP or Primavera.
So Actually, you are, I am yes. here to know many of the things which I don't know. Okay, That's why okay. I'm here. I Great, already great. enrolled primary P6 course from Protrainy few years back. Okay, okay, okay. Great. What about others? Anyone who has zero experience in project planning and project management? Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Is there anyone who is just pass out or having zero experience in any field? Okay, great. So let me introduce myself. I'm Sanjay s- Agarwal. Okay, yes, yes, yes. Please tell me. आप कुछ Sorry, बोलिए. sorry to disturb you, sir. हाँ बोलिए ना, Here is बोलिए a सर. one point of mine which I just want to mention so that it can optimize the clear picture to you. That's Okay, I okay. already been work as a planning engineer for 6 years. So it Great. was not in a deep status that it's required the particular projects on particular software, right? So there Hmm. is the nominal team because I was working in a Chinese company. They have their own software, and it's not required so much details indeed. Okay, However, I was promoted to the senior position in different department, but my interest was were same to work in planning field. great. So I already work on MSP itself for 1.5 years, but it is Hmm. still now I'm planning to switch my company or the job positions into the same field. Hmm. So it was my own objection that I should have a knowledge of the P6, another alternative option also. So this is the thing which I'm looking for. That how it's Okay. different for the other projects or tools and how it's going to help me. ग्रेट 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 हम इन टुडे सेशन हम दोनों का डिस्कशन करेंगे एमएसपी एंड प्राइमावेरा बोथ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड प्राइमावेरा एंड व्हाई प्राइमावेरा you should learn because in terms of project management, right? Because एमएसपी में शेड्यूलिंग बहुत आसान होती है, right? If you are looking for only scheduling, so you should opt to MSP. Otherwise, if you are looking for the whole project planning, project management, and if you are looking for multiple projects, आप multiple projects में एक साथ parallelly work करना चाहते हो, so MS Primavera is for you. If you are looking for big projects, so उसमें आपको Primavera बहुत help करेगा. सो व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम बहुत बेसिक से लेके चलते हैं सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एवरीथिंग विच यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी डाउट you can ask. Hello, sir. Hello. Hello, sir. My name is Gul Mohammed. My experience is 5 years as a structural engineer. मतलब Structural engineer. I using e-tax मतलब e-tax start pro Great. all work. Stat Pro भी यूज कर But रहे हो आप? yes, e-tax and start pro. What sir I am मैं चेंज करना चाह रहा हूँ मैं प्लानिंग इंजीनियर में मैं प्राइमरी में मतलब कि एज अ गल्फ कंट्री एंड अदर गल्फ कंट्री द प्राइमरी P6 and MS1 is very important. Great, I great. Then think this session will be for you. ये session yeah, आपके लिए ही है, right? So this session is for you, for those who are looking to change their fields. So अभी मेरी structure स्क्रीन विजिबल है क्या सभी के लिए? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, माय it is स्क्रीन. visible. Yeah. yes. ओके, थैंक यू, थैंक यू. आप कुछ बोल रहे थे? समवन इज सेइंग समथिंग. Sir, if you could introduce, means tell us more about your experience, means which field you are. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. Yeah. हाँ. Yes, actually, I have working for project planning and project management for more than 10 years. And my core expertise is for project planning and project management as well. In Primavera, I am good at Primavera comparatively MSP because मैंने Primavera में ज़्यादा काम किया है and I love Primavera compared to MSP because Primavera is very deep in terms of project management because you cannot work parallelly in a different project
once you have a number of projects, right? Or I'm also providing training in field of project planning and project management. I do have consultancy for project planning and project management. मेट्रोज में मैंने काम किया है, यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के काम मैंने किए हैं, भोपाल में और इंदौर के मेट्रोज के लिए मैंने प्रोजेक्ट मैनेज किया है. So still I'm providing trainings and providing consultancy to some kind of some companies and construction companies too. So that is all about me. So are you looking for the job change, or as you already said that ki you're looking for a job change? So if you are looking for a job change, then this session is for you, because in this session we are going to understand why this session. Hello. 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 Yeah, I'm not able to see the screen. Yeah, I am also not able to see it. Let's message it. Hello. Hello. Just a second, sir. I think there's some issue from the trainer side. I'm just trying to connecting with them. Just be on the line. I'm really sorry for that. Yeah. Hello, Preetham, am I audible? Yes, sir. You are Yes. audible. Okay, okay. Yeah. Again, As you sharing try to screen. share the screen again, I'm just checking. Okay. So yes, if you are looking for a job change, then this session is for you. And if you are also looking to, if you are fed up about in your existing fields, then again this session is for you. And if you are looking for some kind of permanent field, then again this session is for you, because this session is all about project planning and project management, जो कि civil engineering fields का ultimate goal है. Primavera and MSP are basically tools used for project planning and project management. And I'll show you tools also, how you will manage your project, how you will create your project. If your project is, big budget project, then what are the strategies you should opt to create your project? And after creating baseline, how you should manage your project and what kind of strategies you should opt for managing your projects. So basically सॉफ्टवेयर प्राइमावेरा जो है वो ओरेकल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, एंड जो माइक्रोसॉफ्ट है दैट इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. आई शो यू दिस सॉफ्टवेयर एज वेल. So here you can see this is the software of Primavera, and here you will see this is the software of Microsoft MSP. And in both software, you can see here, if you are working for MSP, so MSP will look like a kind of Excel, right? ये थोड़ा सा आपको Excel जैसा feel होगा. And here you will see some kind of tools, and these tools also look like Excel kind of. But यहाँ पर आप MSP में प्राइमावेरा में आप देखते हैं, you will see in Primavera this portion is basically your details, and these are your Gantt chart. Gantt chart is basically graphical representation of your project. And here you will see already in MSP you have number of projects which is already in it. I'm going to show you some projects.
So if may ask you, what is the ultimate success of any project? What is the success criteria of any project? And why do we require such softwares for that? Anyone? What is the ultimate success of your project? How you will define your project is successful or not? Yeah, a project which can be fulfill the 4 points standards of the any projects. For example, Hmm. the safety, Okay, safety, in budget, on budget, time, on and time, quality yes, wise. quality wise, and And yeah, four yes, points. These are my that's it. 4 points. Right. So here the points are: success criteria, delivered on time. Your project must be on time. So for must be on time, you need to understand what is schedule variance and what is schedule performance index in terms of project management. And what is schedule performance index, and how you will calculate the schedule performance index and schedule variance to identify where your project is going time on time or not. अगर वो time पर नहीं जा रहा है तो कितना time और लगेगा? That things you need to identify in project management. Second is within the budget. Within the budget. Otherwise, you need to calculate the EVM, earned value management, the S curve, the financial period of your project, cost account of your project, resource curve of your project, S curve of your project. These terms you may be aware, or I think जो लोग अभी बिल्कुल भी इस फील्ड्स में नहीं है, आई नो उनके लिए ये टर्म्स थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना टफ होगा, बट once you will enter in the course, believe me, after completing this course, every point, every terms, each aspects of project planning and project management, you will going to learn in the session. Next is meeting all the requirements. If your project, whether your deliverables are meeting the requirements, your milestones are meeting the requirements, quality are meeting the requirements or not. If these three parameters are matching, that means your project is success. So for these projects, और इनकी हमको requirement क्यों है? Because you have number of activities, right? Your project is having number of activities. In this project, you can see here, I'll show you, let's say city center office building. This is your project. So in this project, you will see there are number of activities, and the project is for 681 days, approximately 3 years. So this project is starting from 1st of November 2010 and ending 3rd of July 2013, approximately 3 years. So it's 3 year project, and these are the number of activities. These are the activities, and here you can see these green, these are basically WBS. And if you minimize them like this, see, these yellow marks are called WBS. And if you expand them, then these are your activities. So you need to understand the activities, what are the activities in your project, the duration of your project, the relationship between the projects amongst the activities, the resource part, the calendar parts, calendar, the resource bill of quantity, the units of your resources, successor, predecessor, you need to calculate the expenses, other expenses except labor, manpower, material, and machineries. There are three kind of resources in your project.
apart from these resources, जो भी expense आपके project में आता है, whether it is your traveling cost, whether it is your training cost, whether it is your electricity cost, water supply cost, every cost apart from manpower, material and machineries comes into the expenses. बट यहाँ पर आपको एक एक्सपेंसेस का यहाँ पर ऑप्शन सेपरेट मिलता है, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो लोग एमएसपी यूज करते हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेपरेटली एक्सपेंस का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है. सिमिलरली इन Primavera, you will see some differences, like you have the option of threshold issues and risk. And in MSP, you don't have the option of threshold issues and risk. If am I wrong, correct me. You don't have any options for threshold issues and risk in Primavera in MSP. But now let me, can anyone tell me why risk is important in your project and how you will calculate the risk? Anyone? Is risk important in your project or not? Yes. Important. Yes, risk important, right? Okay, understood. रिस्क को हमको कहाँ कंसीडर करना चाहिए? वेयर शुड वी कंसीडर रिस्क, इन प्रोजेक्ट प्लानिंग और इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? while planning or while managing, where should you consider your risk? In planning phase. In planning phase. So can you registered risk in MSP? No. No. I'm not But sure. no. But again, in MSP have one option to register, but in Primavera you have a separate option, kind of risk register you may take. So here the risk register kind of option, where you can easily identify the impact, the pre-response and post-response, how you will assess your risk. This is one of the important criteria, because अगर आपने project planning के time पर risk को assess नहीं किया होगा, no matter how good you are at project management, अगर आपने रिस्क को assess नहीं किया और उसको enter नहीं किया है, so if रिस्क जैसा कोई ऑप्शन अगर at the time of project management होता है, so you are going to suffer. और वो अगर डिलीवरेबल्स में भी नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, तो अगेन यू आर गोइंग टू सफर अ लॉट. सिमिलरली थ्रेशोल्ड इश्यूज, ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं. यू कैन नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन एमएसपी, राइट? You cannot upload documents in MSP, but you can upload documents. You can make a list of documents. You can make a list of your expenses. Similarly, you have some options of OBS, organizational breakdown structure. You can create your organizational breakdown. You can create your cost account. You can create your funding source. Funding source is basically from where your company is getting funds to execute the project. Resource curve. सो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, फॉर दोज जिनको आ रहा है, वेरी गुड. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो ये समझ में इसलिए भी आपको नहीं आ रहा बिकॉज वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, राइट? बट व्हेन वी स्टार्ट आवर सेशन, तो हम बहुत स्क्रैच से, बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत डिटेल में इसमें जाने वाले हैं. विजुलाइजर्स, वी हैव स्टोर्ड पीरियड परफॉर्मेंस. Similarly, if we work on MSP, so every topic, every point we will cover in detail, whether it is your schedule, whether it is task, insert properties, your resources, your resource pool, resource planning, assigning your resources, creating budget, reporting your projects. So every aspect, everything we will cover in detail, both in MSP and in Primavera. Again, how you will handle your project. So for handling your project, you must have aware about all your activities, or you may say tasks. And what are the tasks and activities? These are your tasks. Let's say if we say this,
in activity, or here you can say project initiation है, project initiation में land survey and soil testing, project approval, these are your activities or task. हम MSP के अंदर इनको टास्क कहते हैं, प्राइम वगैरह के अंदर इनको हम एक्टिविटीज कहते हैं. Both are same thing. In excavation and foundation, site cleaning and labeling, excavation for foundation, foundation footing, and plinth beam, these are your activities or tasks. So again, yes, one planning, and you should have knowledge about the duration of your task. After calculating the duration, you need to understand the relation कि किस एक्टिविटीज के बाद हमको दूसरी एक्टिविटी करनी है, मतलब हमको पहले कौन सा काम करना है फिर दूसरा कौन सा काम करना है, लाइक दिस. Again, you need to understand the resources and cost management. That means the resources, हमको कौन कौन से लेबर यूज होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, कौन कौन सी मशीनरीज हमारी यूज होने वाली है. इसके अलावा हमारा जो मटेरियल है, कितना क्वांटिटी में कौन कौन सा मटेरियल हमारा यूज होने वाला है, उसका कॉस्ट क्या होगा. दैट the resource part must be considered. And then other expenses like traveling, your fixed cost, your office expenses, कंप्यूटर की कॉस्ट है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, मीटिंग की कॉस्ट है, एवरी कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम मैन पावर, मटेरियल एंड मशीनरीज आर योर एक्सपेंसेस. रिस्क इश्यूज एंड थ्रेशोल्ड. एमएसपी में ऑप्शन नहीं है, पर ऑप्शंस आपको क्रिएट करने होंगे. डॉक्यूमेंटेशन वर्क. देन आफ्टर डॉक्यूमेंटिंग in till this portion, till documentation, this part, this is your project planning. And after, once you planned your project, that means your budgeted cost has been come, your time has been calculated, budgeted time. Now we will assign one baseline. And after baseline, tracking comes into the picture. Tracking is basically tracking your project, managing your project. EVM and critical path method to identify the critical path. That means zero float. And EVM, earned value management. Again, to calculate the milestones. Reporting. Then comparison. Comparison between projects, planned project versus executed project. Then findings हमको calculate करनी होगी. एस्कर is basically graphical representation of your project health. Similarly जो हम EVM में करते हैं वही हम ग्राफ में करते हैं. फिर some findings and many more जो कि आप इसमें सीखने वाले हैं. So why Primavera और MSP help in detail project scheduling. आपकी project scheduling में बहुत help करता है. Efficient resource management, you can efficiently use your resources. हमको कितना hours use करना है एक project में, किसी resources का हमने कितना hours use किया उसका, अगर वो हम उसको extra overtime cost दे रहे हैं, अगर overtime हमारा calculate हो रहा है, that overtime can be calculated in MSP और Primavera. बजट एंड कॉस्ट को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क को एंड एनालाइज कर सकते हैं, एनहांस द टीम कोलेबोरेशन, बिकॉज इन प्राइमावेरा वो एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो इन क्लाउड्स. यू कैन ब्रेक डाउन अ लार्ज प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल टास्क. बड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं हम. असाइन डिपेंडेंसीज एंड सीक्वेंस वाइज हम जा सकते हैं and provide clear timeline execution. बहुत easily time wise हम इसको manage कर सकते हैं. Allocating manpower. If is there any kind of over allocation? Allocation is basically putting someone or allocating or putting someone to any kind of task. If you are allocating someone in any task, that is allocation of manpower. Allocation of material, allocation of machineries,
that you can efficiently done in project in MSP or in Primavera. Tracking expenses, you can track your expenses. आप उसमें थ्रेशोल्ड लगा सकते हो कि भाई एक एक मेरी एक्टिविटी है, सपोज कीजिए कि मेरा 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में 10-15 एक्टिविटीज है, हर एक एक्टिविटीज में हमने बोला कि ये जो एक्टिविटीज है वो 10% से ज्यादा इसकी कॉस्ट या 5% से ज्यादा कॉस्ट वेरी नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स हर एक एक्टिविटीज, सपोज कीजिए एक एक्टिविटी की कॉस्ट है 10 lakhs, अब 10 lakhs का 5%, सो 10 lakhs का 5% जो होगा उससे ज्यादा कॉस्ट उसमें नहीं आनी चाहिए, हमने थ्रेशोल्ड लगा दिया। सो दिस ट्रैकिंग पार्ट इज देयर। एंश्योर ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, if any अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो वो आपको एक ग्राफ में, जिसको हम रिसोर्स ग्राफ कहते हैं, रिसोर्स कर्व कहते हैं, वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। सो यस, रिस्क एंड रिपोर्ट्स, potential risk help to mitigate the delay and cost impact and generate the reports. So reports are basically decision making process. Once you are able to create the reports of your total project or any kind of reports, suppose कीजिए हमको सिर्फ resources की reports calculate करनी है, या फिर सिर्फ cost की reports create करनी है, या सिर्फ सिर्फ resource activities की report create करनी है, there are ample of reports which you can create. Here I'll show you some example of reports. See, these are the report segments which you can see. Any kind of report, let's say status, activity के status की report, activity relationship की report, cost wise report. So every kind of reports you can easily create, not only in Primavera, in MSP also. In MSP you have that option to creating the reports. So what is the conclusion? Basically, Primavera is essential to execute. Again, help for optimizing your schedule, cost, and resource. Not only Primavera, if you are looking for MSP, because I'm again saying for scheduling, if you are looking for only planning part, not the execution part, and if you are looking for only planning part, then MSP is for you. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द होल सेशन, और अगर आप गल्फ कंट्री के लिए मूव करना चाह रहे हो या फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए देख रहे हो, तो यू शुड ऑप्ट प्राइमवेरा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाह रहे हो, तो यू शुड ऑप्ट प्राइमवेरा। और अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करते हो तो इट विल हेल्प यू लॉट, यू कैन मूव टू एनी प्रोजेक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। बिकॉज अगर शेड्यूलिंग आपको टफ पड़ रही है प्राइमवेरा में, आपने उसको एमएसपी में शेड्यूल करके आपने उसको प्राइमवेरा में इंपोर्ट कर दिया। सो दैट इज दैट ऑप्शन ऑल्सो यू हैव कि आप इसको प्राइमवेरा से इंपोर्ट करके एमएसपी में ले लो, या एमएसपी से इंपोर्ट करके प्राइमवेरा में ले लो, या एक्सेल में जनरेट कर लो। सो काइंड ऑफ you know changes, import and export you can do. So this is all about project planning, project management, or Primavera and MSP. So now please ask any doubt, any questions if you have. Yes. Sir, could you show us any sample projects or which you have created in past classes, so that we Yes, means what yes, kind of yes. projects we are going to discuss? I'll show you. I'll show you. See, this is the sample project for G+12 building. And in this G+12 building, what you can see the WBS, the breakdown of your project, the activities. So these are the activities. And now after creating these activities, what are the consideration? See,
Okay, thank you, sir. So I'll show you. I'm showing you. I'm explaining again. Here you can see your project must be lies within 18 to 24 months, right? And these are the relation. And if you are looking for bill of quantity, so these are the material details with unit wise, with price wise, with quantity wise, and the total cost account. The cost account of cement, cost account of steel, सैंड्स, सभी का एक सेपरेट सेग्रीगेशन है. एंड अगेन लेबर वाइज सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, अनस्किल्ड, इक्विपमेंट वाइज, यूटिलिटी वाइज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल्स का क्या कॉस्ट आने वाला है, मिसलेनियस कॉस्ट, दीज मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, सारी जो कॉस्ट को जब आप सम अप करते हो, सो दिस प्रोजेक्ट कम्स अराउंड 7 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 69, 6.9 lakh, 6 crore 94 lakh, so approximately 7 crore. So once you will create this project, you will make a plan of this project, आप उसकी शेड्यूलिंग करते हो, तो वहां पर आपको अगर ये कॉस्ट सेम आती है और ड्यूरेशन सेम आता है, and after that, after creating baseline, you execute the project. So वहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग और पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा कवर हो जाता है. आई शो यू अगेन वन प्रोजेक्ट G+5, and again I have G+3. This is also a project. The rate list, company side breakdown, client side deliverables, and again we have ample of projects, right? Deliverables, we have सोलर प्रोजेक्ट्स, काफी टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम काम करते हैं, और इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लर्न करते हैं कि प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करेंगे और फिर एग्जीक्यूट कैसे करेंगे. Sir, how many projects we will be discussing actually in the main classes? 3 to 4. Okay, and all of them will be from the building sector or solar sector? Construction. Construction means construction with respect to buildings actually, or metros. Buildings, high-rise building, yes. Okay, okay. So basically it will be buildings. Okay. But Thank you. but you see, if you know the core value of project planning and project management, you can create any kind of project, right? Correct, sir. Correct. अगर if you are from mechanical, let's say you are from mechanical, not from civil, then again Primavera is MSP for you. And if you're from electrical, again Primavera is MSP for you. Now you can see here, see, engineering, construction, energy field, manufacturing. If you are from the product development, IT company, so यहाँ पर segregation भी है EPS का. EPS is basically enterprise project structure. आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो, आप पहले कंपनी क्रिएट करते हो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो. Okay. Others, anyone have any doubt and want to ask anything? कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए. इन आवर सेशन बहुत बेसिक से स्टार्ट करके पूरा डिटेल में हम जाते हैं, एवरी पॉइंट हम इसमें कवर करते हैं. तो सर मेरा मेन मोटिव तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का था और उसको डिटेल में कैसे जा सकते हैं. ठीक है, आप अपने काफी इंट्रोडक्शंस में काफी पॉइंट्स कवर किए जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ पीसीएस के थ्रू मैं काफी डिटेल में जाके प्लान कर सकता हूँ. बहुत डिटेल में जाएंगे. सी अभी हम अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यू हैव फाइनेंशियल पीरियड्स, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. फाइनेंशियल पीरियड्स एंड स्टोर पीरियड परफॉर्मेंस.
These are basically the core value of creating your project into segregation. जैसे एक एक होता है कि एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को आपने क्या किया, लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर 10 प्रोजेक्ट्स पैरेलली, जो कि आपकी कंपनी के पास है। सिमिलरली एक प्रोजेक्ट के लिए एक कॉस्ट होगी, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अलग कॉस्ट होगी, बट आपकी कंपनी के लिए तो सारे 10 प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक साथ आएगी ना। तो अब मैं यहाँ पर ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि फ्रॉम जनवरी टिल जून, इन 6 मंथ में टोटल मेरे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट हैं आपके अंडर में, उनका जनवरी से लेकर जून तक में आपने कितना पैसा इन 10 प्रोजेक्ट में खर्च किया एक साथ, अलग अलग, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका प्रोजेक्ट है फॉर, लेट्स से योर प्रोजेक्ट इज फॉर 6 ईयर, और इस 6 ईयर के प्रोजेक्ट्स में यू नीड टू कैलकुलेट कि आपने 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आपने कितना एक्सपेंस किया, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने कितना एक्सपेंड कर दिया, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। दीज कैलकुलेशन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय द फाइनेंशियल पीरियड। सो वी विल गो एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम इतना डेप्थ में जाते हैं कि हम यहाँ तक कवर करते हैं उसको। आई डोंट नो आई यू गेटिंग और नॉट। No, it's quite. We'll start with the scratch actually. Yes, we will start with the scratch, like what is lag, what is float, right? What is slack, what is lead, what is critical path. So we'll start with some some these terminologies which we are going to use in project planning and project management. Once you are aware about these terms, then we will create the company, when we will create the project, we will create calendar, or on detail wise after we will come all complete the project planning part. Once we plan the project, that means अगर हमने प्रोजेक्ट को प्लान कर लिया है, इट मींस हमारे पास में दो चीजें आ गई है। वन इज योर बजटेड कॉस्ट, टोटल बजटेड कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, और दूसरा आ गया टाइम, कि इन विच टाइम यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, टू थिंग्स। और बस इन दोनों को ही हमको ट्रैक करना है आफ्टर बेसलाइन। Baseline is basically a line between project planning and project management. उस लाइन के बाद का जो सेगमेंट है दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमको ये देखना है कि आर वी मूविंग फ्रॉम आवर बजट और मूविंग फ्रॉम आवर टाइम और नॉट। और अगर हम मूव कर रहे हैं तो कितना मूव हो रहा है, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, और अगर ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो फिर वो रेगुलर मेंटेन हमको करना होगा। Please schedule the fixed time of the class. I mean, which time class will start or on the regular basis. Okay, the class is I think alternate day. So alternate day हमारी classes लगती है, I think MWF, और in TTS you have that time कि आप इसको practice करो, because practice is the one of the part जो आपको करना होगा as a trainee, because Actually, sir, my मैं my concern was to हम्म, on every alternate days. By हम्म, which time? By 8:30, by 9 p.m., by 9:30 p.m. By which time class nine, will be start? Because mostly 9 p.m. okay, so I can assume that class will start either on 9 p.m. or afterwards of 9 p.m. Right? 9 p.m. At sharp 9 p.m. पे हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। ओके, एंड अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? सी, प्राइमावेरा एंड MS project, these are very important tools if you are seriously looking for a job change and if you are stuck with your salary, then yes, these softwares is for you. And इसमें जो knowledge आप gain करने वाले हो in our session, so ये आपका experience काफी अच्छा होगा। और at the time of at the end of the class हम जब डिस्कस करेंगे तो यस यू विल फाइंड कि
जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मिलेगा क्लास के अंदर इन डिटेल. Okay. Yes, if anyone wants to ask anything, or shall we close? So what resource allocation and how it is work? So resource allocation is basically assigning the resource into the activities. Resource allocation is basically assigning your resources. जैसे हमने यहाँ पर आप देखिए MSP या प्रोजेक्ट प्लान दोनों में आप चेक कर सकते हो. जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखते हो तो सी दिस. आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे एक इंजीनियर है, एक सॉइल किट है, एक सर्वेयर है और एक टोटल स्टेशन है. इस एक्टिविटी में आप देखिए एक लीगल टीम काम कर रही है. साइट क्लीनिंग में आप देखिए लेबर है, 15 लेबर है जो काम कर रहे हैं. इस एक्टिविटी में यू हैव 15 300 सीमेंट बैग है. सिमिलरली इफ यू गो देयर एंड in this activity, any activity, in particular activity, your how your resource will work. एक रिसोर्स कितने घंटे उस एक्टिविटी के लिए काम करेगा, वो जो रिसोर्स होगा वो किस टाइम से किस टाइम पर काम करेगा, दैट पार्ट. लेट्स सी हियर डिजाइन बिल्डिंग एडिशन. इसमें देखिए मिस्टर पॉल एंड ये लोग काम कर रहे हैं. टोटल बजट क्या है इनका, लाइक दिस. शेड्यूल क्वालिटी चेक डिले यस ये हम करेंगे हमारे. If you skip any class, so you will have recording session for that. You can access the recording session and learn from there. And after the recording session, once you go through the recording session, then if you have any doubt, then we will cover the doubt. Then we will move the class after covering your doubts. See, यही पैटर्न होता है हमारा. सबसे पहले हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है कि डू यू हैव एनी डाउट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन वी विल कवर द डाउट फर्स्ट, देन फिर हम आगे की क्लास को मूव करते हैं. सो यस, अभी क्या कई बार क्या होता है, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम वर्किंग बैकग्राउंड राइट, यू आर ऑल आर वर्किंग, तो आपके पास में कई बार टाइम नहीं होता है. तो वो जो टाइम का जो प्रॉब्लम आता है ना, वो बहुत मैंने देखा है. तो वो आपको थोड़ा सा करना होगा, बिकॉज मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ. पढ़ाने के बाद जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो आप ही को करना होगा ना, बिकॉज हमारी जो क्लास है वो ऑफलाइन नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे हो और सामने प्रैक्टिस कर रहे हो. तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी. आफ्टर प्रैक्टिस सेशन आपको डाउट आएंगे, 100% आएंगे. और अगर आपको डाउट आएंगे तो देन इन आवर क्लास, इन एवरी क्लास, फर्स्ट वी विल कवर योर डाउट, देन वी विल मूव द क्लास. मिस्टर रोहन, यस. How we will find if project is success or failure on the basis of your some performance index, some KPI parameters. Anyone can tell me what is KPI parameters? Yeah, key performance index. These all are the key Yes, performance key index. performance. That जैसे the कि project is going on budget or out of budget, or it's तो going on schedule as planned, or it's going. I mean, the project is leading or lagging. तो वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? ईपीआई एसपीआई, हाँ, वो उसमें Yes. कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? सीपीआई एंड एसपीआई, CPI, SPI, right, Cost right. Cost performance index and schedule performance and index. schedule performance index. Yes. है ना, कॉस्ट वेरिएंस एंड शेड्यूल वेरिएंस. सो कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज आप बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यू आर ओवर बजट, अंडर बजट, है ना. आप ओवर शेड्यूल हो, अंडर शेड्यूल हो, आप बिहाइंड योर प्रोजेक्ट हो, अबव योर प्रोजेक्ट हो, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो उससे. तो वहीं से आपका सक्सेस क्राइटेरिया आता है. जैसे एक फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड इफ योर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज 1, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक. And if your cost performance index is more than 1, that means you are under budget.
and if your cost performance index is less than 1, that means you are over budget. तो क्या सही होगा? 1, more than 1, less than 1? Anyone? क्या सही होगा? More than 1, less than 1 और 1? 1 and more than 1. 1 ही होगा, क्योंकि अगर more than 1 आ रहा है तो आप तो अंडर बजट में हो. That means you are compromising somewhere in the quality. तो आपको क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज करना, मतलब आपको पैसे बचाने भी नहीं है. सो इफ यू, तो दैट मीन्स क्लोज टू 1, राइट? 1 तो मुश्किल होगा लेकर आना, बट यस, if you are close to 1, that means you are going on a right track. So that is the project success. It's mean it will be always in minus, sorry, less than 1, right? हाँ, वो ज्यादातर होती तो लेस देन 1 ही है. मोर देन 1 अगर है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग वेल, ओवर बजट है. कि आप तो पैसे भी बचा रहे हो और अच्छा काम भी काम कर रहे हो. नहीं, अगर लेस देन 1 है तो वो अंडर ओवर बजट है. अगर लेस देन 1 है मतलब ओवर बजट है, और मोर देन 1 है मतलब अंडर बजट है. मतलब 1 लाख रुपए का काम है, आपने 1 लाख रुपए ही खर्च किए, दैट मीन्स 1. 1 लाख रुपए का काम है, आपने 80 लाख में काम, 1 लाख का काम है, आपने 80,000 में कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स यू आर अंडर बजट. तो आपका जो सीपीआई है वो मोर देन 1 आएगा. और अगर आपका 1 लाख का काम है, आपने 1,20,000 में कंप्लीट किया, तो आपका जो सीपीआई है वो लेस देन 1 आएगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो बजटेड कॉस्ट है, बजटेड कॉस्ट के अंडर में ही हमको इसको कंप्लीट करना है. विद इन द बजटेड टाइम हमको कंप्लीट करना है. whatever the time is decided in the project at the time of planning, उस टाइम और उस कॉस्ट के साथ में हमको लेके चल रहा है. सो उसके लिए क्या ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं? For that you have the unit parts. So here you can see this part. This is called budgeted unit, and this is called regular unit, and this is overtime unit and actual unit. Budgeted unit मतलब, budgeted unit is basically, unit is equal to hours. जैसे मिस्टर पॉल है, मिस्टर पॉल जो है वो 55 डेज अगर काम कर रहे हैं, तो 55 डेज में इनका 448 आवर्स हम यूज करेंगे इन 55 डेज. बट एक्चुअल में देखिए क्या हुआ, एक्चुअल में इनका जो 998 जो आवर्स था हमने यूज किया. तो आप मुझे बताइए, हम यहाँ से ओवर बजट होंगे या अंडर बजट होंगे? अंडर बजट होगा. हाँ, ओवर बजट. ओवर बजट हो गए. एक्चुअल था 442 और हमने एक्चुअल में यूज कितना कर लिया? 990. इतने घंटे यूज कर देते पर इतने घंटे यूज कर डाले. सो इट मीन्स कि यू आर ओवर बजट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन, because of rescheduling of your work, and you need to identify and calculate on the physical manner ki why this happen. Because of lack of work experience, lack of or repetitive work, या फिर ऐसा क्या था कि इस पोर्शन पे इतना टाइम हमको लगा होगा. So this actual cost, and if he is working on the overtime basis, तो यहाँ पर overtime cost भी यहाँ पर calculate होके आएगी. Then your budgeted cost and your actual cost. This is your budgeted cost. This is your actual cost. So this is the way to understand and calculate the cost. और जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है, और प्रोजेक्ट की सक्सेस इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग योर प्रोजेक्ट हेल्थ. और फॉर आइडेंटिफाइंग योर प्रोजेक्ट हेल्थ, ईवीएम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, अर्न वैल्यू से ही आपको प्रोजेक्ट का सारा डिटेल आपको पॉइंट वाइज आपको मिल जाता है उसमें. वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू.
Anything? So class will be start on every alternative day by the 9 p.m. to 10 p.m. right? Or आपको वो शेड्यूल मिल जाएगा, आई थिंक वो 1.5 आवर की क्लास होती है। 1.5 कभी hour? कभी वो, Okay. हाँ कभी कभी वो 2 घंटे की क्लास होती है। एंड जो जो क्लासेस होगी दैट विल बी इन हिंदी और इन इंग्लिश बोथ। हम इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं और हिंदी में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते हैं। सो देयर इज नो इशू रिलेटेड टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज का कोई वेरिएंस इसमें नहीं आता, बिकॉज वी विल ठीक है, एक्सप्लेन तो इन नेक्स्ट हिंदी एंड क्लास कब इंग्लिश होगी सर? बोथ। नेक्स्ट क्लास कब होगी? आई थिंक प्रीतम, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन हिम? प्रीतम, आई देयर? प्रीतम, जो क्लास जो है वो शेड्यूल्ड है वेडनेसडे से। ओके। कल जो होगा वो डे 0 होगा, मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह होगा। वेडनेसडे से फिर सेशन स्टार्ट होगा। हाँ राइट, ओके। Okay. मैं बस मेरे मेरे को दो हेल्प चाहिए था ये भी, कि जी। आप एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे ख्याल से मैं ऐड ऑन नहीं हूँ, कि मैं मेरे ख्याल से मैं नहीं हूँ। और अगर एक ओके। व्हाट्सएप ग्रुप एक एक व्हाट्सएप ग्रुप है भी, हम व्हाट्सएप हम्म। ग्रुप पे हैं या टेलीग्राम्स में, वो आप एक बार कंफर्म कर देना। और ओके। प्लीज एक ग्रुप ऐसा रखना जिसपे, जो अभी करंट ग्रुप जो मैं देख रहा हूँ उस पे आई कैन नॉट रिप्लाई और आई कैन नॉट आस्क माई क्वेरीज ओवर देयर। नहीं, एक्चुअली व्हाट्सअप जो रहता है ना, वो वहां पे किसी से बात नहीं कर पाते, मतलब वो एकदम हाँ कोई भी कस्टमर एक दूसरे से बात, जो भी हम शेयर होता है वो एडमिन ही शेयर कर पाते। मतलब आपको क्या जानना है? आपको एनरोल करना है या फिर आपको कुछ डिटेल्स जानना है? नहीं, फॉर एनी इंफॉर्मेशन, इफ आई हैव सम क्वेरीज अबाउट द ओके। इंस्टॉलेशन, और फॉर एग्जांपल अभी 3 दिन पहले मेरे को जो मैंने इसमें एनरोल किया था, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी कि बाय बाय यस्टरडे क्लास विल स्टार्ट बाय द 8:30 हाँ। पीएम। हाँ। और ओके। जब वो मैसेज मेरे को आज मॉर्निंग में मिलता है कि मिलता है, सॉरी कल दोपहर में मिलता है वो, कि हम्म। उन्हें क्लास जो है कि बाई 8 ऑफ जून स्टार्ट होगी। 8 जून? उस पर टाइम, हाँ उस पर टाइम भी मेंशन नहीं था। तो 8 जून मेरा जो आज सर, आज वर्कशॉप है। 8 जून आज ही है, आज वर्कशॉप है। हाँ जी, वही तो मैं बता रहा हूँ आप, दैट्स व्हाट आई वांट हाँ। टू एक्सप्लेन यू, कि आज का इंफॉर्मेशन मुझे कल मिला और टाइम भी ओके। उस पर मेंशन नहीं था। ओके। एंड फॉर अस, अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ये चीज की 7 तारीख वर्कशॉप होने वाला था, वो सर नहीं हुआ and आपको डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि 8 तारीख को इतने बजे सेशन हो रहा है, राइट? इतने बजे नहीं होगा, सिर्फ डेट मेंशन है, उस पर टाइमिंग मेंशन नहीं है। एंड फॉर अस, दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, हमारे लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना थोड़ा सा, एक जैसे सर ने मेंशन किया जरूर कि जरूर आपको सर, टाइम मैं एक मैनेज बार वो करना टीम पड़ेगा। से चेक कर लेता हूँ, वो जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है हाँ। रीजन क्या है, मैं एक बार टीम से चेक कर लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम से ये अगर इश्यूज ना हो, आई विल टेक केयर ऑफ एंड द सेकंड इशू इज दैट आई हैव मैक एयर, दैट। और मुझे ऐसा लगा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगा। बट इस चीज के लिए भी मुझे अलग से क्वेरी राइज करनी पड़ी है। तो अगर मैं व्हाट्सएप पे अगर नहीं कर सकता, तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसपे मैं अपनी क्वेरीज राइज कर सकूं और इस तरीके के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकूं एडवांस, ताकि क्लास के टाइम पे मेरे कोई इशू ना हो। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। आप एक बार काम कीजिए, आप अपना नंबर यहाँ पे मैसेज नोट पे क्लिक कीजिए। आई विल पर्सनली कॉल यू एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस ऑन टुमारो। ओके? ऑलराइट, यस। ओके थैंक यू सर, फॉर यू मे दैट। कंटिन्यू। या थैंक यू सर। ओके संजय सर, यू मे कंटिन्यू। यस मिस्टर गोविंदा राज, हाँ आप ये जो प्रोट्रेनी की ऐप है आई थिंक, उसमें आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास। After the session of each class, you will get the recordings of the session in the Protrainy app. And once I think you get registered, so if you get registered, so you can contact directly to Preetham, and he will guide you for that. See, every query, every doubt will be resolved, and उसके बाद ही हमारा सेशन आएगा। Before the class, okay, before the class need to be done.
Okay. One thing you should, I think आपको जो clear होनी चाहिए, that is your software must be installed, and you may go through some videos of project planning and project management. So वो go through आप जब करते हो तो once we will discuss the things, you will cover all the parts of that project planning and project management. So वो बहुत easy होगा, जैसे अभी हमने वीडियो फ्रॉम वेयर फ्रॉम प्रोट्रेनी ऐप, वो आपको मोबाइल ऐप प्रोट्रेनी की जो मोबाइल ऐप है उससे आपको मिल जाएगा, वो भी आपको इंस्टॉल करवा दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट. For software part, I think Preetham, could you please explain in? Mr. Ahmed wants to ask, will you provide software for installation? Yeah, that's why I was telling you to have a one WhatsApp group where such kind of tiny issues or important issues we can resolve earlier, or we can Yes, communicate easily, so that we I yes, don't have yes, to yes. ask between the class, and I don't want to disturb either you or anyone else. So as Great, me. great, great, great. So for that, Preetham, please do what they are saying actually. So if yes, ये सब है हमारे पास, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट होता है, और जो भी क्वेरीज होती है, डाउट्स होते हैं, वो भी रिजॉल्व होते हैं, और आप पूछ सकते हो उसमें, उसमें कोई इशू नहीं है. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम Hmm. दैट विच यू वांट टू आस्क एनीवन? No, from my side, it's okay. Just want to have the software installation in advance. The second thing is to have a clear any platform where I can communicate easily with anyone. I mean, for sure from by the. I mean, I'm concerned to the institution part. The डेफिनेटली second, डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन के लिए तो रहेगा, वो होता ही है, yeah, सारे ग्रुप्स के लिए होता है. the second thing, as class is going to start by the Wednesday by the 9 p.m. So before than that, what we have to do or what we don't have to do, either please share the same or whatever वो the part you are going to plan. हाँ, वो That's it वो from my क्लियर हो side. जाएगा सर. वेडनेसडे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, बट ट्यूसडे को आपका जीरो डे होगा, जिसमें ये जो जितने भी डाउट्स हैं कि कहाँ पर कम्युनिकेट करना है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, उस पर डिस्कशन होगा ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को प्रीतम विल टेक केयर ऑफ यू, एंड ये जो हमारे स्टाफ है, जो आपके डाउट्स है, ये सारे क्लियर होंगे. एंड देन Oh, आफ्टर इंस्टॉलेशन, और फिर वो वेडनेसडे से हमारा एक क्लास स्टार्ट होगा. फर्स्ट डे क्लास स्टार्ट okay. होगी वेडनेसडे से, पर प्रीतम विल टेक केयर ऑफ जीरो डे ऑन ट्यूसडे. Yes, Pratham please share me the time by which time you are going to start these things on Tuesday, so I can make myself available. Hello. ये प्रीतम आई देयर? Yes, sir. Most probably, sir, class will be at 9 p.m. But we'll be sharing the link at like in the community group. So we'll be informing you. Am I audible, Sanjay sir? यस यस, यू आर ऑडिबल जसलीत. Okay. Anything apart from this? Okay, sir, please give me a quick agenda shortly what we will discuss in all class. Okay. In all class, what we will discuss the project planning and project management. In short, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि we will create the project. Only two things we are going to discuss in the class. One is project planning and one is project management. For project planning, आपको WBS चाहिए, यू नीड टू क्रिएट कंपनी, यू नीड टू क्रिएट प्रोजेक्ट, यू नीड टू क्रिएट OBS, you need to create WBS, you need to create calendar, you need to create relation, milestones, floats, constraints, और उनके resources,
एक्सपेंसेस, ये सब जब कवर हो जाता है तो एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल के आ जाती है, प्रोजेक्ट का टाइम निकल के आ जाता है. देन वी विल मैनेज द प्रोजेक्ट. And for managing your project, there are different kind of strategies. So all the strategies we will cover in the session. और उन strategies से क्या क्या findings होते हैं, बहुत सारे अलग अलग methods होते हैं for tracking your projects. तो वो सारे methods को हम discuss करेंगे in the class. Govindaraj, is it clear? Now, any doubt, or if you want to ask anything, please ask. Okay, so I think I don't have any doubts. So, Jaslyn, are you there? Yes, sir. So you can carry on because my session is over right now. So we are closing the session.